ব্ৰিটেইনছ গট টেলেণ্ট আমাৰ নামটো শুনিলেই আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে কেনেকুৱা হ'ব ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম তোমাৰ ভয় লাগিছিল নে নাই আমাৰতো শুনিয়ে ভয় লাগি যায় ইমান মানুহৰ আগত আমি তেনেকৈ ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিম তোমাৰ ভয় লাগিছিল নে তুমি নাৰ্ভাছ হৈছিলানে इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाई एंड गाइस थैंक यू सो मच आप लोग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया যে মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ বিনীতা ছেত্ৰী তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছিলে তেতিয়া তোমাৰ ইমান ড্ৰিম এটা আছিলে পিংক প্ৰিন্সেছ হাউচ নমস্কাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰত্যেকগৰাকী দৰ্শকক মই বৰ্ণালীয়ে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি কিছু বিশেষ এইকাৰণে কাৰণ আমাৰ সৈতে আছে এগৰাকী বিশেষ অতিথি তেওঁ এইকাৰণে বিশেষ কাৰণ তেওঁ কণমানি কিন্তু হ'লেও তেখেতে অসমৰ নাম সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছে আমি সকলোৱে তেওঁক লৈ গৌৰৱান্বিত আনন্দিত গতিকে আহক আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতোঁ বিনীতা আমাৰ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ তোমাক স্বাগতম জনাইছোঁ বিনীতাৰ কথানো মই কি ক'ম বিনীতা তুমি যিহেতু ইমান ডাঙৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্লেটফৰ্মত তুমি নাম উজ্বলাবলৈ সক্ষম হৈছা তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে ফাৰ্ষ্টতে मुझे बहुत ভাল লাগিছে मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाई एंड गाइस थैंक यू सो मच आप लोग ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड मैंने भी इस शो के लिए बहुत मेहनत किया एंड सपोर्ट एंड मेहनत को मिला के मैं आज इंडिया को रिप्रेजेंट कर पाई সো ব্ৰিটেইনছ গট টেলেণ্ট আমাৰ নামটো শুনিলেই আমাৰ এনেকুৱা লাগে যে কেনেকুৱা হ'ব ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম তোমাৰ ভয় লাগিছিল নে নাই আমাৰতো শুনিয়ে ভয় লাগি যায় ইমান মানুহৰ আগত আমি তেনেকৈ ডান্স পাৰফৰ্ম কৰিম তোমাৰ ভয় লাগিছিল নে তুমি নাৰ্ভাছ হৈছিলানে जब मैंने ऑडिशन दिया था तब मैं थोड़ा सा नर्वस थी बट मैं कॉन्फिडेंट भी थी बट जो सेमीफाइनल एंड फाइनल था उसमें मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हुई बिकॉज नर्वस होने से कुछ होएगा नहीं बिकॉज करना हमें अपना बेस्ट है আৰু এতিয়া তুমি কোৱা যে তুমি যে ব্ৰিটেইনছ গট টেলেণ্টত তুমি যে চান্সটো পালা সেই মানে কেনেকৈ তোমাৰ আৰম্ভ হ'ল সেই গোটেই জাৰ্ণিটো তোমাৰ ক'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ল তুমি কেনেকৈ গম পালা তুমি অডিশ্যন কেনেকৈ দিছিলা কেনেকৈ খবৰ পালা এই গোটেইখিনি কথা আমাৰ দৰ্শকক তুমি কোৱা मैं जब 3 साल की थी तब से मैंने डांस करना शुरू किया था एंड मैं बुआ को देख के इंस्पायर हुई उनसे उनको डांस करते हुए देखा मैंने तो मुझे भी इंटरेस्ट आने लगे डांस में एंड उसके बाद हमारा ऐसे चलते गया और फिर मैंने इंडिया में रियलिटी शो किया सुपर डांसर चैप्टर 4 एंड डांस दीवानी जूनियर एंड देन उसके बाद मैं जयपुर गई ट्रेनिंग करने के लिए देन उसके बाद मैंने सीखा हार्दिक रावत सर से एंड वो मैं अभी भी सीख रही हूँ उनके साथ और फिर उसके बाद क्या मैंने एक शो डांस आइकन सीजन 2 जिसमें मैं विनर आई थी एंड अभी रिसेंटली मैं ब्रिटेन्स गॉट टैलेंट किया एंड उसमें मैं रनर अप आई तो ভাল লাগিছে मुझे बहुत ভাল লাগিছে कि मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म में जाके आई और इंडिया को मैं प्राउड करा সঁচাকৈ দৰ্শকসকল বহুত ডাঙৰ কথা আচলতে ইমান কম বয়সতে তাই যিখিনি কৰিছে অসমৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে আৰু তাই নিজৰ কাৰণে এইখিনি আমি সঁচাকৈ শলাগ ল'ব লাগিব আৰু তাই কৈছে তাই 3 বছৰৰ পৰা তাই ডান্স কৰিছে হয়নে আৰু তোমাৰ ঘৰৰ পৰা তোমাৰ কেনেকুৱা আছিলে মাহঁতে ডান্সৰ স্কুলত দিছিলে और देवताहते सपोर्ट करिছিলে पूरा हाँ मतलब फैमिली से फुल सपोर्ट था मेरा पहले से ही मेरे पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड वो उन्होंने सपोर्ट किया इसलिए मैं आज अभी इतने बड़े मंच पर जाके आई এতিয়া আমি অকমান ব্ৰিটেইনছ গট টেলেণ্টৰ বিষয়ে কিছু জানিম যেতিয়া তুমি ফাৰ্ষ্ট টাইম সেই ষ্টেজখন দেখিছিলা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ জাজেছ তাতে ইমান মানুহ তোমাৰ প্ৰথম কেনেকুৱা লাগিছিল যেতিয়া তুমি ষ্টেজত নিজকে কৈছিলা যে মই অসমৰ পৰা আহিছোঁ বিনীতা ছেত্ৰী তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছিলে তেতিয়া मैं जाने से पहले तो ऐसा नर्वस थी एंड देन मैं जैसे एंट्री हुई तो लोगों का वाइब देख के मुझे अच्छा फील होने लगा एंड उसके बाद फिर मतलब हाँ कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ते गया আৰু তুমি যেতিয়া তাত গলা তাতে জাজেজৰ তোমাক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিएक्शन আছিলে वो मुझे मतलब बहुत पसंद आए है ना और फिर उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए जिससे मैं खुश हुई बहुत ज़्यादा
আৰু তাতে কি চালা তুমি ইংলেণ্ডত গৈ পেলাই लास्ट दिनों असीले और उस समय मैंने लंदन ब्रिज देखा और भी बहुत सारी जगह देखी मैंने जो मुझे नाम नहीं पता আৰু এতিয়া তুমি কেনেকুৱা ক'বা যে আমিতো যেতিয়া আমি ইয়াতে থাকোঁ মানে আমিতো ভাত ৰুটি চব্জি এনেকুৱা খাওঁ হয়নে তাতে তুমি কি খানা ট্ৰাই কৰিছিলা वहाँ पे बस एक ही चीज़ मिलता है वो है बर्गर बर्गर ऐसे ब्रेड वगैरह मिलते रहता है वहाँ पे तो वही खाना पड़ता है তেতিয়া অসমৰ খানাখিনি মিছ কৰিছিলানে তুমি कैसी মিছ কৰিছিলা কি মিছ কৰিছিলা সবচে বেছি দালি ভাত তাতেতো দালি ভাত নাই তাতে অকল বাৰ্গাৰে খালা মানে আৰু তাতে তোমাৰ থাকি কেনেকুৱা লাগিলে মোক বহুত ভাল লাগিছে एंड इट्स द ग्रेट एक्सपीरियंस क्योंकि इतने बड़े स्टेज में जाके आना और इंडिया को प्राउड कराना और मैं भी उस समय बहुत खुश हुई পুৰা লাইফ টাইম মনত থাকি যাব হয়নে हाँ আৰু প্ৰথম ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা আছিলে যেতিয়া তুমি পাৰফৰ্ম কৰিলা তুমি ঘৰত তাতে তোমাৰ যিহেতু তোমাৰ পেৰেণ্টছ আছিলে গতিকে আহি পেলাই তুমি মাহঁতক কি কৈছা ফাৰ্ষ্টতে যে মা মোৰ কেনেকুৱা লাগিল মানে ভাল লাগিছে মই ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্মত নাচি আহিলোঁ তুমি তোমাৰ কেনেকুৱা আছিলে फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको मेरे ऊपर बहुत प्राउड हुआ बिकॉज मैं इतनी सी उम्र में इतना बड़ा स्टेज में जाके आई एंड मुझे भी बहुत खुशी हुई मैं असम तो नहीं आई थी तब डायरेक्ट जयपुर गई थी बट ऐसे फ़ोन कॉल में हुआ बातें एंड वही हमारा बस ये बातें हुआ कि हाँ मुझे अच्छा लगा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जजेस ने भी मुझे बहुत पसंद किया एंड আচ্ছা লগা আৰু তাতে অকণমান লেংগুৱেজৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ অকণমান অসুবিধা হৈছিলে নেকি হৈছিলে মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধা তুমি বেছিকৈ ফেচ কৰিলা जैसे कि इंग्लिश बोलते हैं ना इंग्लिश मुझे समझ में आती है बट उनकी एक्सेंट जो होती है ना वो बिल्कुल अलग होती है तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता কিন্তু হ'লেও তুমিতো কি ধুনীয়াকৈ তাতে নিজকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছা হয়নে ইমান কনফিডেঞ্চ তোমাৰ মনত ক'ৰ পৰা আহিলে কেনেকৈ তুমি নিজকে ইমান কনফিডেণ্টলি চবৰে আগত তুমি প্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰা কেনেকৈ আমাৰ দৰ্শকক অকণমান কোৱাচোন मुझे भी नहीं पता बट आ जाता আহি যায় ন নিজে নিজে আৰু যেতিয়া ডান্স কৰি থাকা তেতিয়া চাগে তোমাৰ কনফিডেঞ্চ লেভেলটো এনেই বাঢ়ি গৈ থাকে হয়নে আৰু কি ক'বা তুমি কোৱাচোন অকণমান নিজৰ ফালৰ পৰা যে মানে তুমি এতিয়া কি ভাবিছা নেক্সট তুমি কি কৰিবা কাৰণ ইমান ডাঙৰ প্লেটফৰ্ম এটাত তুমি যেতিয়া ইমানখিনি ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্ম কৰি আহিলা তুমি ৰানাৰ্ছ আপ হ'লা গতিকে এতিয়া তোমাৰ নেক্সট আৰু তোমাৰ কি কৰিবৰ মন আছে अभी तक मैंने कुछ फ्यूचर का प्लानिंग नहीं किया एंड मुझे बस ये है कि मेरे डांस को और इम्प्रूव करना है और बेहतर बनाना है एंड आगे भी मैं ऐसे शो करूँगी इंटरनेशनल अगर कोई अच्छे लेवल में मैं कुछ काम करूँगी तो आप लोगों के पास ऑफ कोर्स खबर आ जाएगा एंड हाँ और इस बार मैं विनर नहीं हो पाई बिकॉज फिर मेरा पिंक प्रिंसेस हाउस का सपना नहीं रहा बट कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूँगी इंटरनेशनल शो जीतने का एंड वो विनिंग प्राइज से मैं पिंक प्रिंसेस हाउस एक ना एक दिन ज़रूर बनाऊँगी আৰু মই এইখিনিতে তোমাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰথমতে ধৰ আমাৰ এটা সপোন থাকে ন যে আমি ইণ্ডিয়াতে ধৰ মানে এইটো ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিলোঁ এনেকুৱা ৰিয়েলিটি শ্ব' কৰিলোঁ তুমি ইণ্ডিয়াত কৰিছা কিন্তু তাৰপিছত তোমাৰ মনত সেই কথাটো কেনেকৈ আহিল যে নাই অকল ইণ্ডিয়াতে নহ'ব মই বাহিৰতো যাব লাগিব সেই চিন্তাটো তোমাৰ মাইণ্ডত নিজে আহিলে নে তুমি কাৰোবাক দেখি পেলাই ইনস্পায়াৰ হৈ পেলাই ভাবিলা যে নাই ময়ো কৰিব লাগিব এনেকুৱা मतलब मेरे जो सर है हार्दिक रावत सर उन्होंने भी इंटरनेशनल लेवल में शो कर रखे हैं वर्ल्ड ऑफ डांस एंड उनको देख के भी मैं इंस्पायर हुई कि अगर सर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हाँ তো वो तुम्हारे दिल में था সেইটো তোমাৰ মনত আছিলে আৰু সেইকাৰণে তুমি এই ষ্টেপটো ল'লা আৰু ইমান ভাল প্ৰদৰ্শন কৰি আহিছা এতিয়া আহিম আমি তোমাৰ পিংক প্ৰিন্সেছ হাউচটোৰ কথালৈ সেইটোৰ কথা তুমি কি ক'বা তোমাৰ ইমান ড্ৰিম এটা আছিলে পিংক প্ৰিন্সেছ হাউচ মানে সেইটো বিষয়ে অকণমান কোৱাচোন আমাৰ দৰ্শকক मैं इस बार नहीं खरीद पाई बिकॉज मैं विनर नहीं हुई बट कोई बात नहीं मैं नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करूँगी कि मैं और अच्छा करूँ और ऑफ कोर्स मैं जीतूँ शो और उस विनिंग प्राइज से मैं पिंक प्रिंसेस हाउस बनाऊँ তুমি বনাওগি জৰুৰ हाँ हाँ আৰু এতিয়া তুমি কোৱা যে তাতে যিখিনি তুমি মানুহ লগ পাইছিলা
তেওঁলোকে বাৰু কেতিয়াবা আমাৰ ধৰ অসমৰ মানুহ বুলি ক'লে অকণমান আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছিলে নেকি কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত नहीं उन्होंने बल्कि इंडिया से बोल के वो बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं वहाँ के लोग बहुत स्वीट होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे से बात करते हैं और बहुत प्यार से তোমাৰ ফেভৰেট জাজ কোন আছিলে साइमन सर एंड ब्रूनो सर কিয় তোমাৰ সবচে বেছি ভাল লাগিছিলে साइमन सर के बेटे ने एक बात बोली थी कि मेरे लिए विनीता विनर है ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था तो वो चीज़ मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी वो मूवमेंट আৰু গোটেই তোমাৰ শ্ব'টোত সবচে তোমাৰ বেষ্ট মোমেণ্ট কোনটো আছিলে মানে যে তুমি ভাবিছা যে এই মোমেণ্টটো তোমাৰ লাইফত যদি আকৌ এবাৰ আহি যায় ৰিক্ৰিয়েট কৰিব যদি মন যায় তুমি সেইটো মেমৰিটো কোনটো বুলি ক'বা সবচে বেষ্ট গোটেই জাৰ্নিটোত जब मैं सेमीफाइनल वोटिंग के थ्रू फाइनलिस्ट बनी तब वो मेरा बेस्ट मोमेंट था बिकॉज इंडिया से मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट थी जो बीजीटी में फाइनलिस्ट बनी तो इसके लिए वो मेरा सबसे बेस्ट मोमेंट সেইটো সবচে বেষ্ট মোমেণ্ট আছিলে हाँ এতিয়া যদি আমাৰ ধৰ এনেকুৱা বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে হয়নে যিসকলে তেনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম বিচাৰে বা বহুত এনেকুৱা অভিভাৱক আছে যিসকলে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক তেনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্মত লৈ আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকক তুমি কিবা ক'বানে নিজৰ ফালৰ পৰা आप लोग अपना जो करना चाहते हो आप लोग चूज़ करना कि हाँ मुझे ये करना है पर्टिकुलर जैसे कि मैं डांस करती हूँ तो मैंने डांस के लेवल में रिप्रेजेंट किया इंडिया को ऐसे आप भी ऐसे आगे जाइएगा और अपनी चीज़ों को लेके कंटिन्यूसली रहेगा एंड आगे के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक মানে সকলোৱে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব লাগিব হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিব লাগিব হয়নে তেতিয়াহে নিজৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব পাৰিব হয় আৰু এতিয়া মই তোমাক এটা লাষ্ট অকণমান এটা কথা সুধিম যে যিহেতু তুমি তাতে গৈ পেলাই তুমি ইমান ধুনীয়াকৈ পাৰফৰ্ম কৰিলা হয়নে যেতিয়া সেই লাষ্ট মোমেণ্টত তোমাৰ নামটো এনাউন্স কৰিছিলে সেই মোমেণ্টত তোমাৰ মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ মনৰ অনুভৱ হৈছে তুমি ভাবিছিলানে তুমি মানে ৰানাৰ্ছ আপ হ'বা তোমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সেইখিনি টাইমত মাইণ্ডত তোমাৰ মানে হেৰি চলি আছিলে কথা চলি আছিলে मैं ये सोच रही थी कि विनर होंगी नहीं होंगी या कौन से पोजीशन में आऊँगी जब मैं थर्ड पोजीशन में थी मैं तब मैं यही सोच रही थी कि थर्ड आऊँगी सेकंड आऊँगी या विनर होगी और यही दिमाग में चल रहा था मेरा है ना और फिर जैसे उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि थर्ड पोजीशन में विनीता है सेकंड रनर अप तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि मैं विनर नहीं हुई बिकॉज मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया को प्राउड करवाया और इंडिया भी मेरे से बहुत खुश हुई मतलब पूरी पब्लिक मतलब यूके की पब्लिक भी बहुत खुश हुई मेरे से एंड वो मेरे लिए बहुत अच्छा मोमेंट था एंड সঁচাকৈ বিনীতা তোমাক লৈ আমি সকলোৱে বহুত বেছি গৌৰৱান্বিত তুমি যেতিয়া তাৰে পৰা অসম ঘূৰি আহিলা তেতিয়া অসমৰ মানুহৰ ৰেছপন্সটো তুমি কেনেকুৱা পালা সবেইতো তোমাক একদম বহুত হেৰি কৰিছে ন বিনীতা আহি গ'ল ইমান ধুনীয়া এটা প্লেটফৰ্মত আমাক ইমান প্ৰাউড ফিল কৰাই পেলাই তেতিয়া অসম আহি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছিল मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज जब मैं एयरपोर्ट से निकलते ही मतलब भीड़ जमना शुरू हो गया कि तुम ही हो ना विनीता सेलिब्रिटी আহিছিল অকমান মনত সেলিব্ৰিটি তাৰপিছত मैंने ऐसे ही चलते गया फिर बहुत सारे इंटरव्यूज़ हुए मेरे बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए और बस हाँ ऐसे करके फिर हम कामाख्या मंदिर पे गए फिर वहाँ पे भी बहुत सारे मीडिया ने मेरा इंटरव्यू लिया और माता डी का दर्शन भी हुआ এতিয়া অসমত আহি তুমি ফাৰ্ষ্টতে কি খাইছা फर्स्ट একদম প্ৰথম আহিয়ে যে অসমত আহিয়ে যে মই এইটো গৈয়ে খাম এনেকুৱা এটা আছিল ন তাতে থাকোঁতে দালি ভাত আহিয়ে খাইছা আৰু এতিয়া কোৱাচোন তোমাৰ পঢ়া শুনা এতিয়াতো তুমি পঢ়িবও লাগিব লগতে তোমাৰ ডান্সৰ কেৰিয়াৰটোও তুমি লগত লৈ যাব লাগিব গতিকে দুটা তুমি কেনেকৈ বেলেঞ্চ কৰিবা बैलेंस हो जाता है बिकॉज मैं जब मैं 3 साल की थी तब से मैं डांस कंटिन्यूसली कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी तो मतलब ये एक मेरा हैबिट बन गया है कि दोनों को बैलेंस करना पहले मुश्किल हुआ था बट हाँ उसके बाद मैं सीख गई ये डांस भी करना है और पढ़ाई भी दोनों को मतलब बैलेंस में रखना है আৰু লগতে মা দুটাহঁতৰো ছাপোৰ্টটো লাগিব যাতে দুটা বস্তুৱে তোমাৰ সমানে সমানে চলি থাকে হয়নে তুমি আমাক সৰুকৈ কিবা অকণমান দেখুৱাবা নেকি এনেই তোমাৰ যিকোনো এটা সৰু ষ্টেপ
বহি বহিয়ে যদি কিবা হাতৰ মুভমেণ্ট তুমি কৰি দেখুৱাব পাৰা আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে धन्यवाद এইটো কি বুলি কয় टटिंग আচ্ছা আমি ইমান নাজানো বাৰু কিন্তু হ'লেও তুমি এনেকৈ আগুৱাই গৈ থাকা আৰু আমাৰ অসমকে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষকে তুমি বহুত প্ৰাউড ফিল কৰাই অলৰেডি কৰালা আৰু আশা কৰিম তুমি যাতে আৰু বহুত দূৰ আগুৱাই যোৱা थैंक यू ধন্যবাদ